सिर्फ देखने से इंग्लिश पढ़ना नहीं आएगा, पढ़ना तभी आएगा जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे। क्या आपको अभी तक इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है या बड़े बड़े इंग्लिश शब्द देखकर आप रुक जाते हैं? तो आज का यह प्रैक्टिस सेशन, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस सेशन आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश पढ़ने का सबसे आसान तरीका सिखाऊंगी। आपको सिर्फ मेरे साथ पढ़ते जाना है और रोज़ नियमित रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। याद रखिए, इंग्लिश पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ सही प्रैक्टिस होती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही तेज़ और आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस सेशन। तो यहाँ पर देखिए, आज एक पैराग्राफ है, इसको हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। मैं सारे जो वर्ड्स हैं उनका उच्चारण बताऊँगी, किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है, और आप भी इस तरीके से मेरे साथ प्रैक्टिस करें। नहीं समझ में आए तो फिर से इस वीडियो को देखें, फिर से कोशिश करें। यहाँ पर टाइटल है हाउ, HOW, हाउ टू रीड एन इंग्लिश, नहीं बोलना है इंग्लिश, SH है ना, इसको श पढ़ते हैं, तो इंग्लिश बुक। हाउ टू रीड एन इंग्लिश बुक, ये इसके ऊपर पैराग्राफ है। इसको पढ़ेंगे कि हम जो इंग्लिश की किताब है उसको कैसे पढ़ें। ये इंग्लिश में नीचे बताया गया है, एक एक करके हम सारी लाइंस जो है इनको सभी को धीरे धीरे करके पढ़ते चलेंगे। आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहाँ पर है ये, मैनी पीपल थिंक दैट रीडिंग एन इंग्लिश बुक इज वेरी डिफिकल्ट, बट द truth is that anyone can become a good reader with regular practice. You do not need to know, KN में K साइलेंट है, know every word before you start reading. You only need पेशेंस पढ़ना है, पेटेंस नहीं, पेशेंस। कॉन्फिडेंस एंड द राइट में GH साइलेंट है, राइट मेथड। द फर्स्ट स्टेप is to choose a simple book that matches your level। यानी कि जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो सिंपल बुक का चुनाव करें, ठीक है, जैसा आपका लेवल है। बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ रहे हैं तो 0 लेवल वाली रीडिंग बुक का इस्तेमाल करें। इफ़ यू आर अ बिगिनर डू नॉट स्टार्ट विद अ डिफ़िकल्ट नॉवेल। इंस्टेड begin with short stories, children's, इसको children's पढ़ना है, children's नहीं, children's books और easy English readers. These books contain simple vocabulary and short sentences
sentences so they are easier to understand. Before you begin reading, look at the title, the cover, and the pictures. If there are any, try to guess what the book is about. This small activity prepares your mind and makes reading more interesting while reading the first paragraph, do not stop after every difficult word. Continue reading because the meaning often becomes clear from the context. If you stop too often, you may lose your concentration and your interest. When you find an unfamiliar word first, try to understand it by reading the sentence again. Sometimes the words before and after it give a useful clue. If you still cannot understand it, underline the word and continue reading. After finishing the paragraph, you can check the meaning in a dictionary. This habit helps you become an independent learner instead of depending on translation all the time. Reading aloud is another excellent way to improve your English. When you read aloud, you practice pronunciation, rhythm, and fluency at the same
time. Do not worry if you make mistakes. Every mistake is an opportunity to learn something new. Try to pronounce each word clearly. If you are unsure about the pronunciation of a word, listen to its correct pronunciation and repeat it several times until it becomes natural. Another useful technique is to read the same paragraph twice or even 3 times. During the first reading, focus on understanding the main idea. During the second reading, notice new words, grammar, and sentence patterns. During the third reading, try to read smoothly without stopping. This repeated practice improves both speed and comprehension. It is also helpful to keep a notebook while reading. Write down important words, useful expressions, and interesting sentences. Next to each new word, write its meaning and make your own sentence. This process strengthens your memory and helps you remember the word for a longer period. Reading is not only about looking at words. It is also about thinking, understanding, and using what you learn. Try to read every day, even if you have only 15 or 20 minutes. Daily practice is more effective than reading for several hours. Only once a week. Consistency is the
real secret of success. At first, you may read slowly, but after a few weeks, you will notice remarkable progress. Your eyes will recognize common words more quickly, and your brain will understand sentences with less effort. While reading, do not translate every sentence into Hindi. Instead, try to think in English as much as possible. This habit develops your understanding naturally. Sometimes you may not understand every detail, and that is perfectly normal. Even advanced learners do not know every word in every book. The goal is to understand the overall message, not every single word. तो यहाँ पर ये कंप्लीट पैराग्राफ था। सिर्फ रीडिंग की प्रैक्टिस की। एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखें जैसे इसमें बताया गया है। एक बार नहीं समझ में आता तो 2 बार पढ़े, 2 बार नहीं समझ में आता तो 3 बार पढ़े, बार बार पढ़े और प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आप इंग्लिश रीडिंग में परफेक्ट बनेंगे, इंग्लिश पढ़ना आएगा।